तो है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग ऑफ माय चैनल। मैं हूं देवतोष और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक एग्जीबिशन शो को। और ये है मेटेशिया एग्जीबिशन जो चल रहा है प्रगति मैदान में। इस एग्जीबिशन को देखने के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये एग्जीबिशन 2, 3 और 4 सितंबर तक चलने वाला है। तो चलिए अंदर चलकर ही देखते हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है यहाँ पर ये मेटेशिया एग्जीबिशन में। ये है प्रगति मैदान का गेट नंबर 4 जहाँ से हमें एंट्री लेना है। तो फ्रेंड्स, ये है मेटेशिया एग्जीबिशन के हाइलाइट्स। तो चलिए अंदर चलते हैं और एंजॉय करते हैं मेटेशिया बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल या इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तो इस एग्जीबिशन में ज़रूर आना और मेरा ये वीडियो ज़रूर देखना। मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये एक बहुत बड़ा पेविलियन है जिसके 4-5 गेट्स है और पूरा एग्जीबिशन इसी पेविलियन में चल रहा है। इस एग्जीबिशन में मैंने कुछ एक कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव से बात की है जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स मेरे साथ शेयर किया है। चलिए इनको सुनते हैं ये अपने प्रोडक्ट्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जो हमारा प्लाईवुड में जो क्वालिटी है वो ये जो यूरो प्रतीक वाला प्लाई है, प्रतीक का, तो 50 मिनट्स तक जो है आप इन केस कहीं इमरजेंसी होता है या फायर ऐसा एक्सीडेंट होता है तो 50 मिनट्स तक आपका फायर को रोक के रख सकता है। Exactly. So my name is Abir Fatima. Okay. I am the lead interior designer at an architectural and design studio called Designaware. We are here at Raid Asia. We have a crowdsourced installation that we are presenting here. It's called Flock, and it is a crowdsourced version of a more intensive and collaborative workshop called the Fractals Workshop. So the Fractals Workshop is mainly about using algorithm to design and the top-down design process, as in when you start to build, you don't know what you're building, but the components and the rules and the aggregation of growing the structure kind of dictates the shape that the installation would take. So that is what the Fractals Workshop is mainly about. This is surprisingly made by people who are visiting the exhibition. Okay. So it is not built by me or any other professional as such who knows the rules and the aggregation, how to grow the aggregation, but it is made by people who are visiting the exhibition. So this is one installation, but it is a collaborative work between different people who maybe people who don't even know each other. Disconnected people are coming and connecting themselves. They felt exhilarated, happy, because the best thing about this is that there are no rules, but the shape of the piece flock dictates the shape that the installation would take. Okay. Thank you. Yeah, thank you so much. My name is Jayesh. जयेश। ओके जयेश। ये जो प्लेन कलर सब है ना, किचन में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। मॉड्यूलर किचन में क्या रहता है कि एक्रिलिक जो यूज़ होता है ना काफ़ी कॉस्टली रहता है। उसकी जगह ये पेपर बेस्ड लेमिनेट लगवा सकते हैं आप, तो ये कॉस्टली नहीं रहता है। और ड्यूरेबिलिटी के बारे में, मतलब अच्छा ड्यूरेबल है क्योंकि किचन में ज़्यादातर पानी वगैरह यूज़ होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, सर्फेस को कुछ नहीं होता, पानी गिरेगा कुछ नहीं, एसिड वगैरह कुछ आएगा ना तभी इसमें डिफेक्ट होगा। नॉर्मल पानी से इसको कुछ नहीं होता है। फेस वाली से थिकनेस में अच्छा, ये 0.9 है। ओके। ये 1 mm है, ये भी 1 mm है। ये जो प्रोडक्ट हमारा है ना सारा डिज़ाइन यूरोप में है, ये चाइनीज़ पेपर में। ये जो सब डिज़ाइन है ना आगे वाला, ये चाइनीज़ पेपर है सब। ये इंडियन पेपर में है 0.9 का, ये इंडियन पेपर है सब। ये 0.8 का है ना, ये चाइनीज़ पेपर में है। ये जो हर एक डिज़ाइन अलग अलग है ना वो चाइना से आता है।
सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट मेटिसे एग्जीबिशन। मेरे आज की इस ब्लॉग में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।